Amen. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. I'm ready. Are you ready? Yes. Hi, kids. Hi, बच्चों. Hello. 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 Last time we met, we learned about Joseph being sold into slavery in Egypt by his envious brothers. पिछली बार जब हमने मुलाकात की तो हमें मालूम हुआ कि यूसुफ को मिस्र में गुलामी में भेजा गया. God was with everything Joseph did, and he rose to second in command over all of Egypt, and he saved the country from a famine by using a plan God gave him. खुदा यूसुफ की हर चीज के साथ था. यूसुफ के साथ हर चीज में था और वो पूरे मिस्र पर दूसरे नंबर पर आ गया और खुदा ने उसे बताए हुए मंसूबे को इस्तेमाल करके मुल्क को कद से बचाया. Joseph forgave his brothers for selling him into slavery. यूसुफ ने गुलामों में बेचने पर अपने भाइयों को माफ कर दिया. Joseph's 11 brothers, along with their father Jacob, who God gave a new name of Israel to, moved to Egypt to be with Joseph for the rest of their lives. यूसुफ के 11 भाइयों अपने बाप याकूब के साथ जिन्होंने खुदा इस्राएल का नाम दिया था ताकि वो सारी जिंदगी यूसुफ के साथ रहने के लिए मिस्र में चले गए. Over time, Joseph and his 11 brothers had children, grandchildren, great-grandchildren, and so on. वक्त गुजरने के साथ यूसुफ और उसके 11 भाइयों के हाथ बच्चे पोते नवासे वगैरह में शामिल थे. The descendants of Jacob, or Israel, became a great number of people living in Egypt, and they were called the Hebrews, or the Israelites, because they were all the descendants of Israel, the man formerly named Jacob. याकूब की औलाद इस्राएल मिस्र में रहने वाले लोगों को एक बड़ी तादाद बन गए और उन्हें अब्रामी या इस्राएली कहा जाता था क्योंकि वो तमाम इस्राएल की औलाद थे. इस शख्स का नाम पहले याकूब था. Over time, a new pharaoh was in charge of Egypt who never heard of Joseph from a long time ago. गुजरने के साथ एक नया फिरौन मिस्र का सरबराह था जिसने यूसुफ के बारे में बहुत अरसे पहले कभी नहीं सुना. Pharaoh was the name given to the kings of Egypt.
बादशाहों को दिया गया था। Pharaoh became afraid that this large number of people living in Egypt, called the Israelites, might turn against him because they were not Egyptians. फराउन खौफजदा हो गया क्योंकि मिस्र में रहने वाले सब बड़ी तादाद में लोगों को इस्राएली कहा जाता था क्योंकि वो मिस्री नहीं थे। Out of his fear of this, Pharaoh turned Israelites living in Egypt into slaves, and he was very hard on them. उसके खौफ से फराउन ने मिस्र में बसने वाले इस्राएलियों को गुलाम बना दिया और सख्त था। God was with the Israelites, and even though they were slaves, they kept multiplying. खुदा बनी इस्राएल के साथ और अगरचे वो गुलाम थे, वो बढ़ते ही जा रहे थे। एक बार फिर उसके खौफ से इस्राएली गुलाम मिस्र के खिलाफ हो सकते थे। Again, out of fear that the Israelite slaves might turn against Egypt, Pharaoh made a new law that said any Israelite boys that were born were to be thrown into the Nile River. फराउन ने एक कानून बनाया जिसमें कहा गया कि जो भी इस्राएली लड़के पैदा मिस्र में होंगे उनके खिलाफ हो सकते हैं। One day, इस्राएली लड़के पैदा हुए थे वो नील नदी में फेंक दिए जाएंगे। One day, a Hebrew or Israelite woman gave birth to a boy in Egypt. एक दिन एक अब्रानी इस्राएली औरत ने मिस्र में एक लड़के को जन्म दिया। She tried to hide him so would not throw him into the river, but as he got a little bit older, she could not hide him well. उसने उसे छुपाने की कोशिश की ताकि उसे एक नदी में ना फेंक दे। लेकिन जैसे-जैसे वो थोड़ी बड़ा हो गया, She put the baby boy in a basket near the edge of the river, and she sent his oldest sister to see what would happen to him. तो उसे अच्छी तरह से नहीं छुपा सकती थी। सारे बच्चे इधर को और दो। Pharaoh's daughter came to the river to take a bath. उसने बच्चे को नदी के किनारे के करीब एक टोकरी में रखा। She found the baby and felt sorry for him, and she adopted him. और अपनी बड़ी बेटी को झाड़ियों के पीछे छुपाया और छोड़कर घर चली गई। She named the baby Moses. वहाँ देख रही थी कि उसके साथ क्या होता है। Moses was the adopted grandson of Pharaoh. अचानक फराउन की बेटी नहाने के लिए नदी पर आई थी। Over time, Moses grew into a man. आपस की नजर दरिया के किनारे बहती हुई टोकरी पर पड़ी। One day, he saw an Egyptian slave master beating an Israelite slave, which was one of his own people. उसने अपनी सहेली को हुक्म दिया, जाओ और उसे उठा लाओ। Out of his anger, he killed the slave master and hid him in the sand. उसकी सहेलियों में से एक पानी में टोकरी उठाने के लिए गई। Pharaoh found out about this. Oh, hold on. और जो ही उसने उसे फोन उठाया, बच्चा जाग गया और रोने लगा। And he wanted to arrest Moses. जब फराउन की बेटी ने बच्चे को रोते देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। Moses ran away and hid in a land called Midian for 40 years. और उसने उसे अपनाया। उसका नाम, उस बच्चे का नाम मूसा रखा। मूसा फराउन का अपनाया हुआ पोता नहीं था।
The Israelites cried out to God because they had hard lives as slaves in Egypt. वक्त गुजरने के साथ मूसा एक आदमी का इजाफा हुआ। एक दिन उसने देखा कि God heard their cries. खुदा ने उनकी फरियाद सुनी। Because of a promise God made to Abraham, Isaac, and Jacob that he would make a great nation out of their children, God decided to help the Israelites. खुदा ने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से वादा किया था कि उनकी औलाद से एक अजीम कौम बनाएगा। खुदा ने बनी इस्राएल की मदद करने का फैसला किया। खुदा ने फैसला किया कि वो इस्राएल को मिस्र में गुलाम बनने से आजाद करने के लिए मूसा को इस्तेमाल करेगा। God decided he would use Moses to free the Israelites from being slaves in Egypt. खुदा ने फैसला किया कि वो इस्राएल को मिस्र में गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा को इस्तेमाल करेगा। One day, Moses, who had been living now in Midian for 40 years, saw a bush that was burning, but it never burned up. एक दिन मूसा जो 40 सालों में मदियान के पास झाड़ी देखी जो जल रही थी लेकिन कभी नहीं जली। Moses went to check it out, and God spoke to him through the burning bush. मूसा उसकी जांच करने गया और खुदा ने जल्दी झाड़ी के जरिए उससे बात की। God told Moses that he would send him to Pharaoh to free the Israelites from being slaves in Egypt and bring them to a beautiful land to live in. खुदा ने मूसा को बताया कि वो उसे फरौन के पास भेजेगा ताकि वो इस्राएलियों को मिस्र में गुलामी से आजाद करे और उन्हें एक खूबसूरत जमीन पर रहने के लिए ला सके। Moses was afraid that Pharaoh would not listen to him and the plan would fail. मूसा को खिलाफ था कि फरौन उसकी बात न माने और मंसूबा नाकाम हो जाएगा। खुदा ने God told him that he would give Moses everything he needed to be successful, and he could take his older brother Aaron with him if he was afraid. से बताया कि वो मूसा को कामयाब होने के लिए कुछ भी करेगा और अगर वो खौफजदा हो तो अपने भाई हारून को साथ ले जा सके। मूसा ने खुदा से करने को कहा, सब करने पर इत्तेफाक किया। Moses agreed to do what God told him to do. मूसा 80 साल का था और हारून 83 साल का था। Moses was 83 years old and Moses was 80 years old and Aaron was 83 when God sent them to Pharaoh to tell them that God said to let the Israelites go. दोबारा सुन लो, मूसा 80 साल का था और हारून 83 साल का था। जब खुदा ने उन्हें फरौन के पास भेजा था तो खुदा बनी इस्राएल को जाने के लिए कहा। Moses went to Pharaoh and said that God said to let the Israelites go for 3 days to worship God in the wilderness. मूसा फरौन के पास गया और कहा कि खुदा ने कहा कि इस्राएलियों को सहरा में 3 दिन के लिए खुदा की इबादत के लिए जाने दो। Pharaoh said he will not let them go, and he will make their work harder on them because Moses asked him to let them go. फरौन ने कहा कि वो उन्हें जाने नहीं देगा और वो उनकी मेहनत को मजीद सख्त करेगा क्योंकि मूसा ने उससे कहा कि वो उन्हें जाने दे। Moses told God what happened. मूसा ने खुदा को बताया कि ये क्या हुआ। God told Moses to go back to Pharaoh and again tell him that God said to let the Israelites go from being slaves. खुदा ने मूसा को फरौन के पास वापस जाने का कहा और फिर उसे बताओ कि खुदा ने बनी इस्राएल को गुलाम से जाने दिया। Pharaoh said no. फरौन ने कहा नहीं। Moses had a staff in his hand. मूसा के हाथ में एक अलमा था। He threw it on the ground and God did a miracle to turn it into a snake.
उसने उसे जमीन पर फेंक दिया और खुदा ने इसे सांप में बदलने के लिए मोजा किया. The Pharaoh's evil magicians also threw their staffs on the ground and they became snakes. फराउन शायद जादूगर था. उसने भी अपनी लाठी जमीन पर फेंकी और वो सांप बन गया. But Moses' snake ate all of the magician's snakes, and then his snake turned back into a staff. लेकिन मूसा के सांप ने सारे जादूगर सांप खाने और फिर उसका सांप लाठी में बदल गया. Moses told Pharaoh that he would keep coming back and demand that Pharaoh let the Israelites go. मूसा ने फराउन को बताया कि वो वापस आते रहेंगे और मुतालबा करेंगे कि फराउन इस्राएलियों को जाने दे. Every time Pharaoh said no, God would send a plague on the Egyptians until Pharaoh let the Israelites go. हर वक्त फराउन ने कहा कि तब खुदा तब मिस्रियों पर एक तावन भेजेगा जब तक कि फराउन इस्राएलियों को जाने ना दे. The first time Pharaoh said no, God had Moses turn the Nile River into blood. पहली बार फराउन ने नहीं किया. खुदा ने मूसा को दरियाए नील को खून में बदल दिया. The second time Pharaoh said no, God sent a plague of frogs into Egypt. दूसरी बार फराउन ने कहा नहीं. खुदा ने मेंढकों को एक तावन मिस्र भेजा. None of these plagues bothered the Israelite people, only the Egyptian people. इन मुसीबतों में से किसी ने भी इस्राएली अवाम सिर्फ मिस्री अवाम की परवाह नहीं की. The third time Pharaoh said no, God had Moses send a plague of gnats, or little flies, all over Egypt. तीसरी बार फराउन ने कहा नहीं. खुदा ने मूसा को पहले मिस्र में एक छोटी-छोटी मक्खी भेज दी. The fourth time Pharaoh said no, God had Moses send a plague of bigger flies all over Egypt. चौथी बार फराउन ने कहा नहीं. खुदा ने मूसा को पूरे मिस्र में बड़ी मक्खियों का तावन भेज दिया. The fifth time Pharaoh said no, all of the horses and cows of the Egyptians died. पांचवी दफा जब फराउन ने कहा नहीं, मिस्रियों के तमाम घोड़े और गायें मर गईं. The sixth time Pharaoh said no, God sent sores on the skin of the Egyptian people. छठी दफा फराउन ने कहा नहीं. खुदा ने मिस्री अवाम को जिल्द पर जख्म भेजे. The seventh time Pharaoh said no, huge hail fell on Egypt. सातवीं दफा फराउन ने कहा नहीं. मिस्र पर भारी ओले पड़ गए. The eighth time Pharaoh said no, God had Moses send a plague of locusts or grasshoppers all over the Egyptian homes. आठवीं दफा फराउन ने कहा नहीं. खुदा ने मूसा को तमाम मिस्री घरों में टिड्डी या टिड्डियों की एक बीमारी भेज दी. The ninth time Pharaoh said no, God sent complete darkness over the Egyptians, but the Israelites had light in their homes. नौवीं दफा फराउन ने कहा नहीं. खुदा ने मिस्रियों पर मुकम्मल तरीके भेज दी थी, लेकिन बनी इस्राएल दर्जे के घरों में रोशनी रखते थे. The 10th time Pharaoh said no, it was the worst plague. 10वीं बार फराउन ने कहा नहीं. ये बदतरीन तावन था. God told the Israelites to spread lamb's blood over all of their doorposts. खुदा ने बनी इस्राएलियों से कहा कि वो भेड़ का खून उनके तमाम दरवाजों पर फैलाएं. God then passed over all of the homes of the Israelites who had the lamb's blood on their doorposts, but God took the firstborn person animal of every home in Egypt. तब खुदा ने बने इस्राएल के उन सब घरों को अबूर किया जिनके भेड़ों का खून उनकी दहलीज की चौखट पर था, लेकिन खुदा ने मिस्र में हर घर का पहला पैदा हुआ शख्स और जानवर ले लिया. Pharaoh was so upset about this that he finally let the Israelites go from being slaves. फराउन इस बारे में इंतहा नाराज हुआ कि उसने आखिरकार इस्राएलियों को. A few days after the Israelites left,
Pharaoh changed his mind about letting them go. बनी इस्राएल के जाने के कुछ दिन बाद फराउन ने उन्हें जाने की इजाजत देने के बारे में अपना ख्याल तब्दील किया. He sent the Egyptian army after them to capture them and return them to being slaves in Egypt. उसने मिस्री फौज को उनके जाने के बाद भेजा ताकि उन्हें जाने की इजाजत देने में के बारे में ख्याल बदल लिया जाए. The Egyptian army cornered the Israelites on 3 sides, and their back was to the Red Sea. मिस्री फौज ने इस्राएलियों को 3 तरफ से घेर लिया और उनकी पुष्ट पहरे अधम थी. God told Moses to raise his arms in the air. खुदा मूसा को अपने बाजुओं को हवा में उठाने को कहा. When he did, the Red Sea parted, and the Israelites crossed to the other side on the dry seabed. जब उसने ऐसा किया तो बहरें अलग हो गया और इस्राएल समुद्र में बिस्तर पर दूसरी तरफ चले गए. After they crossed, the Egyptian army tried to follow them across the dry seabed. जब बनी इस्राएल बाहर अबूर हुए तो खुदा ने मूसा से कहा कि वो दोबारा अपने हाथों को हवा में उठाएं. When the Israelites were safely across, God told Moses to raise his arms in the air again. जब उसने ऐसा किया तो बहरे अरब मिस्र की फौज पर गिर गया, तबाह हुआ और उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया. When they did, the Red Sea came crashing down on the Egyptian army, completely destroying it. जब उसने ऐसा किया तो बहरे अरब मिस्र की फौज पर गिरकर तबाह हुआ और उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया. God saved the Israelites from being slaves in Egypt for 430 years. खुदा ने इस्राएल को 430 साल तक मिस्र में गुलाम रहने से बचाया. हालेलुया. Hallelujah. So it's for done. Yep, all done. बच्चों आपको पसंद आया आज का? Thank you. बोलो thank you. Thank you. Love you guys. Love you. Love you too. Thank you, brother. Today, children so much like your lesson. And we loved it, and we love you so much. Oh, we love you too. Thank you. I'm so happy to see all you guys. I love your Sunday school. God bless you both. God bless you. God bless you too. Hello. Today's lesson is very good. Oh, yeah, that's a good one. That's Moses freeing everybody. I like today's lesson. Yeah. Next time you're going to get the Moses, God gives him the 10 Commandments. That's next. Yes. Hello, brother. Hello, how are you? I am fine. Thanks of the God. Oh, How are that's you? good. I'm very good. Very good. My name is Michael. Nice to meet How is you. your family? They're very good. How's your family? No.